Let us discuss about the convergence point of PSIR optional and general studies paper. In these two papers, you have four segments, you have four parts, and in each part, the approach of writing answer in PSIR and Indian polity will be significantly different. When you write answer in general studies, you are less theoretical, you are more about facts and figures. And hello everyone. So let us discuss about political science and international relations syllabus and how this optional paper is going to immensely help you out in a general studies paper. Let us discuss about the convergence point of PSIR optional and general studies paper and how different segments of political science optional paper is going to help you out in your general studies preparation, and how this optional is a bit different from other mainstream optional. So now let us discuss about the paper or your optional paper, know your optional. So in PSIR optional, there are two papers, but it is a bit different from other optional paper, because in these two papers you have four segments, you have four parts, and in each part different themes are being discussed. Different themes are different part of syllabus has been provided there. So that is why I said that the optional paper of political science is different from other mainstream optional paper like sociology or anthropology or geography or history or any other optional paper. So let us discuss about these parts and how different parts of political science and international relations syllabus is going to help you out in your general studies preparation. That is why today's topic is know your optional. So there are two papers. Paper 1, and again, as I told you, in paper 1 you have two sections. Paper 1. So you have section A and section B in paper 1. So there are total 4 sections in PSIR paper. Paper 1, section A and section B. And paper 2, section A and section B. Section A and section B. For our discussion purpose, we will call it 1A and 1B, only for our discussion purpose, and 2A and 2B, and 2A and 2B. अलग अलग ऑप्शनल पेपर में how a different section of PSIR syllabus converges with general studies paper. I'm going to discuss about all those aspects, and we will also be discussing about different parts of the syllabus, what all we are going to cover in PSIR optional paper. So section A, that is 1A of PSIR optional paper first. Now let us begin with 1A, and then we will discuss about 1B. So paper 1, it consists of section A, or as I said 1A, and section B, 1A and 1B. Now this section A, it covers political theory, and this is an important section because this section is going to converge with your ethics paper a lot. So in this paper we will be discussing about mainly political theory, Western political thought, Indian political thought,
And we will also be discussing about the political theory, like political theory, in which we will be discussing about theories of state, meaning and approaches, like what is meant by political theory, decline of political theory, resurgence of political theory, and different approaches of political theory section. So meaning and approaches. What are different approaches? So traditional approaches and modern approaches, etc. This section does not converge with general studies at all. Then comes theories of state, in which we will be discussing about different theories of states, like liberal theory of state, neoliberal theory of state, then pluralist theory of state, feminist theory of state, etc. And then comes a couple of topics which are very relevant from general studies point of view, like theories of rights, theory of liberty, theory of rights, theory of justice, again relevant from general studies point of view. In fact, a couple of times they have also asked question related to Rawls's theory of justice in general studies paper. So this topic is very relevant from exam point of view, कि जहां पर आपको बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे आपके टॉपिक में जनरल स्टडीज के पेपर में, कि जहां सीधे सीधे क्वेश्चन पूछे गए हैं जो आपने PSIR में पढ़ा हुआ है. देन वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट theory of democracy, equality, theory of equality, and theory of democracy. ये सारा का सारा टॉपिक इज रेलेवेंट फ्रॉम जनरल स्टडीज पॉइंट ऑफ व्यू. फर्स्ट टॉपिक एंड सेकंड टॉपिक इज नॉट रेलेवेंट फ्रॉम GS point of view. Other topics are relevant from GS point of view, especially what do you call ethics paper, paper 4. Then there comes another very important part of this topic is section on ideologies. Now in paper 1, you have paper 1 general studies, you have ideologies section. यहाँ पर आप different ideologies पढ़ते हैं. For example, liberalism, मार्क्सिज्म, सोशलिज्म, फेमिनिज्म, वो सारी आइडियोलॉजीज यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे. ये सारे आइडियोलॉजीज आर इंपॉर्टेंट फ्रॉम जनरल स्टडीज पॉइंट ऑफ व्यू. जनरल स्टडीज में सीधे सीधे ये आइडियोलॉजी पेपर वन में ये आइडियोलॉजी दिया हुआ है, जो आइडियोलॉजी सेक्शन हमें यहाँ पे पढ़ने हैं. दैट इज व्हाई आई सेड कि PSI और ऑप्शनल का एक सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि ये जनरल स्टडीज के बहुत मैसिव एरियाज को कवर करता है. आई वोंट से इंटायर GS कवर करता है, बट मैसिव एरियाज को कवर करता है. देयर इज एब्सोल्युटली नो डिनाइंग दिस फैक्ट. देयर आर सम टॉपिक्स इन PSIR which you will not be studying in general studies paper, but majority of the portion you will be studying in general studies paper, चाहे आपका PSI और ऑप्शनल हो या ना हो. फॉर एग्जाम्पल, Rawls's theory of justice, theory of rights और theory of equality, democracy, इनके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए, especially in ethics paper. Then ideology section, it directly covers paper 1 of general studies. Then in one topic of paper 1 general studies is ideologies, different ideologies. And then comes Indian political thought. In Indian political thought, we will be discussing about Kautilya, we will be discussing about Arthashastra, Dharamshastra, and Buddhist tradition. And then we will be discussing about Gandhi, Ambedkar, M.N. Roy, Sir Syed Ahmad Khan, etc. इन सारे स्कॉलर्स के बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे. गांधी के बारे में डिस्कस करेंगे, सर सैयद अहमद खान के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, M.N. रॉय के बारे में हम डिस्कस करेंगे, कौटिल्या के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे. सब यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे. अगेन दिस इज रेलिवेंट फ्रॉम योर पेपर 4 एथिक्स पेपर. औरबिंदो घोष के बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे. एंड देन वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट. अगेन entire Western political thought, except a couple of thinkers, is relevant from
जनरल स्टडीज पेपर 4। यहाँ पर हम लोग प्लेटो के बारे में पढ़ेंगे, एरिस्टोटल के बारे में पढ़ेंगे, मकियावेली के बारे में पढ़ेंगे। बोथ प्लेटो एंड एरिस्टोटल आर इंपॉर्टेंट फ्रॉम पेपर 4 जनरल स्टडीज। Machiavelli is not very important. Briefly, Machiavelli is being touched upon there. Then we will discuss about Thomas Hobbes, John Locke, J.S. Mill. उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स is not very relevant from paper 4 ethics. Then we will discuss about Gramsci and Hannah Arendt. ये तीनों थिंकर जीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, अदरवाइज ऑल अदर थिंकर्स यू विल बी स्टडिंग इन जनरल स्टडीज पेपर 4 आल्सो, बट हियर यू विल बी स्टडिंग दोस थिंकर्स इन डिटेल। फॉर एग्जांपल जीएस के पेपर में आप गांधी को बहुत टच करेंगे, जस्ट सुपरफिशियल आपके पास इंफॉर्मेशन होगा। यहाँ पर थोड़ा डीपली आप गांधी को पढ़ेंगे, अंबेडकर को पढ़ेंगे, कौटिल्या को पढ़ेंगे। सो entire this section A 1A paper 1 का, उसमें ऑलमोस्ट 70% ऑफ द पोर्शन जनरल स्टडीज के साथ कन्वर्ज होता है। बट आई वोंट से कि जीएस में आप इतने डिटेल में पढ़ेंगे। आप जीएस में पढ़ेंगे इन टॉपिक को, इतने डिटेल में नहीं पढ़ेंगे। जीएस में थोड़ा सा सुपरफिशियल नॉलेज आपको लेना पड़ेगा, उतना ही जीएस में आपको चाहिए। यहाँ पर थोड़े ज्यादा डिटेल में हम पढ़ेंगे। दैट इज व्हाई आई सेड दैट entire political science and international relations optional is very relevant from general studies point of view. Then comes section B of PSIR. Now entire section B of PSIR syllabus, it covers multiple areas of general studies and it is relevant from general studies paper 2 point of view, section B. And we will also be covering a bit of post independence history. We will also be covering a bit of modern Indian history. So this covers, the name of the topic is Indian government and politics. And this Indian government and politics topic, Indian government and politics, जहां पर आप मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के टॉपिक्स को कवर करेंगे, फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म टू मास सत्याग्रह फर्स्ट टॉपिक है। दूसरा टॉपिक है पर्सपेक्टिव्स ऑन इंडियन नेशनल मूवमेंट। मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में ये सारी चीजें आप पढ़ते हैं। उसके बाद पूरा इंडियन पॉलिटी का सेक्शन स्टार्ट होता है। अगेन वो जीएस में आप एनी गिवन डे आपको पढ़ना ही है। एंड देन एट द एंड वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे नेहरूवियन मॉडल, गांधीयन मॉडल, प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर। स्पेशली पब्लिक सेक्टर वी विल बी डिस्कसिंग लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी। वो सारे टॉपिक्स हम वहां पर पढ़ेंगे। इन्वायरमेंटल मूवमेंट, विमेन मूवमेंट, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोशल मूवमेंट वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट। सो हियर वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट अ बिट ऑफ मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री. We will be discussing about majority of the portion of Indian polity, and we will also be discussing about a lot of topics from post-independence history. So, for example, first topic from constitutionalism to mass satyagraha, जिसमें different movement के बारे में हम लोग यहाँ पर discuss करेंगे कि कैसे moderate phase से हम extremist phase में हमने enter किया। उसके बाद वी विल डिस्कस अबाउट नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, वी विल डिस्कस अबाउट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। ये सारी चीजें हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे। हाँ, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री जितने डिटेल में नहीं करेंगे। जैसे पेपर 1 का सेक्शन ए में हम लोग बहुत ज्यादा डिटेल में ऑप्शनल में डिस्कस करेंगे, जीएस में थोड़े कम डिटेल में डिस्कस करेंगे। यहां पर हम लोग मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री जीएस की तरह से उतना डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे, बट वी विल टच अपॉन अ नंबर ऑफ टॉपिक्स ऑफ मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री ऑल्सो, फ्रॉम टॉपिक्स लाइक कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म टू मास सत्याग्रह। दूसरा टॉपिक है हमारा पर्सपेक्टिव्स ऑन इंडियन नेशनल मूवमेंट की गांधीयन पर्सपेक्टिव क्या है, दलित पर्सपेक्टिव क्या है, रेडिकल ह्यूमनिस्ट पर्सपेक्टिव क्या है, लिबरल पर्सपेक्टिव क्या है, सोशलिस्ट पर्सपेक्टिव क्या है, कॉलोनियल पर्सपेक्टिव क्या है। Those perspectives we also be discussing upon, and then we will move on to another topic we will move on to Indian polity topic. So from constitutionalism to mass satyagraha, constitutionalism to mass satyagraha.
Then perspectives on Indian national movement. Perspectives on Indian national movement. And then we will be having a number of topics like fundamental rights. ये सब आप जीएस में पढ़ते हैं. डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी. उसके बाद एग्जीक्यूटिव लाइक प्रेसिडेंट, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, ये सारे टॉपिक्स आप जनरल स्टडीज में पढ़ते हैं. देन पार्लियामेंट टॉपिक, सुप्रीम कोर्ट, इलेक्शन, सब पढ़ते हैं आप जीएस में. इलेक्शन. अब यहां पर क्या है कि ऑलमोस्ट 50-60% ऑफ द पोर्शंस विल बी कवर्ड. आई वोंट से कि जीएस प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी यहां पर कवर हो जाएगा. नहीं, प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं कवर होगा, लेकिन हाँ मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से आपका जीएस कवर हो जाएगा यहां पर. इनफैक्ट सिग्निफिकेंट पोर्शन आपका कवर हो जाएगा. आई वोंट से कि टोटल कवर हो जाएगा, बट सिग्निफिकेंट पोर्शन विल बी कवर्ड, क्योंकि द नेचर ऑफ इंडियन पॉलिटी क्वेश्चन एंड नेचर ऑफ पीएसआईआर ऑप्शनल इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स क्वेश्चन, कई बार क्वेश्चन सेम होगा, बट द अप्रोच ऑफ राइटिंग आंसर इन पीएसआईआर एंड इंडियन पॉलिटी विल बी सिग्निफिकेंटली डिफरेंट. जब आप इंडियन पॉलिटी में आंसर लिखते हैं तो आपका आंसर विल बी मोर टेक्निकल. यू विल बी यूजिंग अ लॉट ऑफ केस लॉज, यू विल बी यूजिंग अ लॉट ऑफ आर्टिकल्स. जब आप पीएसआईआर में आंसर लिखते हैं, you will be answering a lot of quotes. You will be answering by writing quotes of the scholars. आप उतनी टेक्निकल नहीं होते हैं, आप थोड़े ज्यादा थ्योरेटिकल होते हैं. एकदम फंडामेंटल डिफरेंस है. सेम क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड इन बोथ पीएसआईआर एंड इंडियन पॉलिटी पेपर, GS2, but the approach of writing an answer will be different. In PSIR you will remain more theoretical in approach. In general studies you will remain more technical in approach. GS में आपका approach will be technical. PSIR में आपका approach will not be technical. वो theoretical approach होगा आपका, जहां आप जॉन लॉक को कोट कर रहे हैं, थॉमस हॉब्स को कोट कर रहे हैं, गांधी को कोट कर रहे हैं, फिर आप आर्टिकल्स के सपोर्ट ले रहे हैं. आप अमर्त्य सेन को कोट कर रहे हैं, शशि थरूर को कोट कर रहे हैं, और फिर आप आर्टिकल्स का सपोर्ट ले रहे हैं अपने आर्गुमेंट्स को सब्सटेंशिएट करने के लिए, अपने व्यू पॉइंट को सब्सटेंशिएट करने के लिए. तो यहां पर आंसर लिखने का स्टाइल विल बी डिफरेंट फ्रॉम व्हाट यू राइट इन जनरल स्टडीज इंडियन पॉलिटी पेपर. बट आई टेल यू दैट दिस एंटायर पेपर, it is relevant from exam point of view. Then you will have a number of movements, social movements. So you will have movements like you will have women movements, civil rights movement, environmental movements, then economic reforms, liberalization, privatization, and globalization, Gandhian model of economy, economic reforms, Nehruvian model of economy, economic reforms, Gandhian model of economy, then Nehruvian model of economy, etc. तो यहाँ पर जो आपका पूरा का पूरा पेपर होगा, इवन इफ यू डू नॉट स्टडी पीएसआई और ऑप्शनल, जनरल स्टडीज में आप ये सारे टॉपिक्स यूं भी पढ़ेंगे, आप उसको स्किप नहीं कर सकते हैं. हाँ, थोड़ा सा अप्रोच में फर्क हो सकता है, लेकिन ये सारे टॉपिक्स आपको एनीवे पढ़ना ही है. That is why I said that there is a lot of convergence between general studies paper and optional paper. There is a lot of convergence. बहुत सारे ऐसे एरियाज आप देखेंगे कि जहां पीएसआईआर का ऑप्शनल आपके जीएस के प्रिपरेशन को बहुत सिग्निफिकेंटली इंप्रूव कर देता है, आपके स्टाइल ऑफ राइटिंग को बहुत सिग्निफिकेंटली इंप्रूव कर देता है. मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि केवल पीएसआईआर ऑप्शनल से ये हेल्प मिलेगा आपको, किसी भी अच्छे ऑप्शनल से हेल्प मिलेगा. जो मेन स्ट्रीम ऑप्शनल है, किसी भी ऑप्शनल से आपको हेल्प मिलेगा. पीएसआईआर का जनरल स्टडीज में कन्वर्जेंस इज वे मोर देन एनी अदर ऑप्शनल. लेकिन सारे ऑप्शनल्स आर गुड, कोई भी ऑप्शनल खराब नहीं होता है. इट लार्जली डिपेंड्स अपॉन द इंटरेस्ट ऑफ द स्टूडेंट, दैट मेक्स किसी भी ऑप्शनल को, दैट मेक्स एनी ऑप्शनल अ पॉपुलर ऑप्शनल. लेकिन पीएसआईआर ऑप्शनल का एक सबसे बड़ा बेनिफिट ये होगा दैट there is a lot of convergence between PSIR optional and general studies paper. Then comes paper 2. Paper 2 section A, again you have two section. Paper 2 आपके पास दो सेक्शन है यहां पे, सेक्शन ए
Section A. Section A, it covers first comparative politics. Now, I won't say that comparative politics is relevant from general studies point of view. Only one topic, that is globalization, responses from developed and developing countries. It might be relevant from essay point of view, but not from general studies point of view. Comparative politics. So this is a standalone topic. Then only one topic यहाँ पर जो comparative में है, globalization, its responses from developed and developing countries might be relevant from exam point of view. Then theories of international politics. Then ये भी GS point of view से important नहीं है. Here we will be studying realism, idealism, then liberalism, then systems approach, etc. Then key concepts. Like यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे बैलेंस ऑफ पावर, नेशनल इंटरेस्ट, ट्रांसनेशनल एक्टर्स, एटसेट्रा, कलेक्टिव सिक्योरिटी, कलेक्टिव डिफेंस, एटसेट्रा. ये भी जीएस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है. Then comes another topic which is very relevant from general studies point of view, in changing world order. इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कोल्ड वॉर. रेलेवेंट, ये जीएस में भी आप पढ़ेंगे. Unipolarity and American hegemony. Unipolarity and American hegemony. American hegemony. Then arms conflict and non-aligned movement. Arms conflict and non-aligned movement. ये सारे topics are relevant from general studies point of view. And then you have evolution of Bretton Woods system. ये भी आप जीएस में पूरा पढ़ते हैं, चाहे आपका पीएसआई और ऑप्शनल हो या ना हो, जिसमें आप पढ़ते हैं अबाउट WTO, evolution of global economic order, starting from Bretton Woods to WTO. तो यहां पर आप पढ़ते हैं अबाउट वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस, वर्ल्ड बैंक, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड. ये तीनों चीजें आपको जीएस में पढ़नी ही है, चाहे आपका पीएसआई और ऑप्शनल हो या ना हो. एंड देन वेरियस रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस. ऑर्गेनाइजेशंस लाइक यूरोपियन यूनियन पढ़ते हैं यहां पर. उसके बाद पढ़ते हैं यूएस, मैक्सिको एंड कनाडा. यूएस, मैक्सिको एंड कनाडा, जिसने नॉर्थ अमेरिका फ्री ट्रेड एरिया को रिप्लेस किया है. ये जीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से, मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत रिलेवेंट नहीं है, लेकिन प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ जाते हैं. जैसे आसियान से रिलेटेड क्वेश्चन, एपेक से रिलेटेड क्वेश्चन प्रीलिम्स में, सार्क, बिम्स्टेक, एटसेट्रा, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं प्रीलिम्स में. सार्क, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन. यहां पर हालांकि हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है बिम्स्टेक, लेकिन मैं करवाता हूं क्लास में, क्योंकि बिम्स्टेक से रिलेटेड क्वेश्चन उन्होंने पूछे हुए हैं. तो यहां पर हम लोग बे ऑफ बंगाल मल्टी सेक्टोरल इनिशिएटिव फॉर टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, देन आसियान एंड एपेक, एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन, हम लोग यहां पर पढ़ते हैं. अगेन a relevant topic from general studies point of view. I won't say कि यहाँ से directly question आएगा, but you should know about these regional organizations. And then United Nations, again an important topic from GS point of view. UN and its agencies, जहाँ पर UN के a lot of UN agencies will be discussed. UN reforms will be discussed, UN Security Council reform will be discussed, and UN agencies will also be discussed in this particular topic. And the last topic is contemporary global concern. उसके बारे में भी आप जीएस में पढ़ते हैं. फॉर एग्जाम्पल क्लाइमेट चेंज, न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन, टेररिज्म, then terrorism. These topics are
relevant from general studies point of view. So last topic is contemporary global concern. Contemporary global concerns. इस कंटेम्प्रेरी ग्लोबल कंसर्न्स में आप टॉपिक्स पढ़ते हैं जीएस में, जैसे फॉर एग्जांपल इन्वायरमेंट, जैसे क्लाइमेट चेंज पढ़ते हैं आप, न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन, प्रोलिफरेशन, टेररिज्म, फेमिनिज्म, ह्यूमन राइट्स, सब जनरल स्टडीज में आप पढ़ते हैं, etc. That is why I said that majority of the topics of PSIR, even if you do not take PSIR optional, you will be studying in general studies paper, but here you will be studying in a lot more detail. And then comes the last part of PSIR syllabus, that is paper 2, section B. Paper 2, सेक्शन बी. इस सेक्शन बी का लगभग पूरा ही पार्ट आप जनरल स्टडीज में पढ़ते हैं जीएस में. इट कवर्स इंडियाज फॉरेन पॉलिसी. लेकिन जो जीएस में पढ़ते हैं और यहां पर पढ़ते हैं उसमें जमीन आसमान का फर्क होता है. यहां पर यू स्टडी इन डिटेल. जीएस में जनरली यू हैव वेरी सुपरफिशियल नॉलेज अबाउट द थिंग्स. सो हियर, यहां पर भी जैसे आईजीपी में मैंने आपसे कहा दैट क्वेश्चंस आर ऑलमोस्ट कॉमन इन बोथ जनरल स्टडीज पेपर एज वेल एज ऑप्शनल पेपर. जहां क्वेश्चन कई बार आपको ऐसे कॉमन क्वेश्चन दिखेंगे. इंडो इजराइल रिलेशन पर एक क्वेश्चन जीएस में पूछा गया है और एक क्वेश्चन ऑप्शनल में पूछा गया है. यू विल फाइंड कि दोनों के थीम या कई बार तो लैंग्वेज भी सेम होता है. इसका मतलब यह है कि शायद सेम एग्जामिनर ने पेपर बनाया होगा, लैंग्वेज भी कई बार सेम आपको मिलता है. लेकिन आप रियलाइज करेंगे कि दोनों के लिखने के स्टाइल में फर्क आ जाएगा. व्हेन यू राइट आंसर इन जनरल स्टडीज यू आर less theoretical, you are more about facts and figures, and sometimes you also quote scholars there, but here you will be quoting a lot of scholars. So yahan par we will be discussing in detail about India's relationship, historical evolution of India's relationship. Then we will be discussing about river water dispute, ethnic conflict in South Asia, then determinants of India's foreign policy. So determinants of India's foreign policy. We will also be discussing about evolution of India's foreign policy. बहुत very interesting topic. When you will study, you will realize that these are very interesting topics. Evolution of India's foreign policy. Then institutions of policy making. कौन-कौन से institution हैं जो foreign policy में हमें help करते हैं? Institutions of फॉरेन पॉलिसी मेकिंग. उसके बाद यहां पर हम लोग डिस्कस करेंगे रिवर वाटर डिस्प्यूट इन साउथ एशिया, एथनिक डिस्प्यूट इन साउथ एशिया, वाटर डिस्प्यूट इन साउथ एशिया. Then ethnic dispute in South Asia. For India का relations with major powers like USA, European Union, China, Japan, Russia, etc. Then India neighborhood. इंडिया का पूरा नेबरहुड के बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे. फिर हम लोग डिस्कस करेंगे इंडिया एंड मेजर इंस्टीट्यूशंस. इंडिया का मेजर इंस्टीट्यूशंस के साथ कैसे रिलेशनशिप है. सो अ लॉट ऑफ इंटरेस्टिंग टॉपिक्स आर देयर कि जहां पर इंडिया एंड ग्लोबल पावर्स, ग्लोबल सेंटर्स ऑफ पावर एंड ग्लोबल पावर्स. So that is India and US relations
India and China relations, that is also called as Sino-Indian relations. Then India-Russia, then India and European Union, India European Union. यहाँ एक और टॉपिक मैं क्लास में करवाता हूँ which is not a part of syllabus. India and France. France has become very important for us, strategically very important for India. Then India and Japan, another power center. And then entire India's neighborhood will be discussed in your class. In India and Afghanistan, India, Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka, etc. Then India's response to the changing order, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे. So that is why I said that entire PSIR optional is very interesting. There is a lot of convergence with general studies. You study these things in very detail in PSIR optional. So that's all about the brief discussion of optional paper. So let us meet in the batch and let us discuss about PSIR optional. I hope that it will be a very enjoyable journey for you if you join PW's PSIR optional batch. So that's all about this lecture. Thank you.